Hello students, I'm already discussing with you work power and energy. अभी मैंने लेक्चर दिया है वर्क पावर एनर्जी में, उसमें मैंने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस किए और मैंने आपको ये भी बताया है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में उनमें क्या डिफरेंस है और कंजर्वेटिव फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज क्या है, पूरी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। लेकिन लास्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से मैं उसको थोड़ा सा आगे नहीं ले सका। मुझे ये करना था कि एक फोर्स जो है, अगर उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है फोर्स का, हमें कैसे पता चलेगा ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? हाउ कैन वी नो दैट ए गिवन फोर्स that you can have an expression of is conservative or non-conservative? जैसे ये क्वेश्चन है, a particle moves in a plane under the influence of the force field. फोर्स फील्ड दिया हुआ है, ये है फोर्स फील्ड। शायद ये विजिबल ज्यादा नहीं है, मैं इसको यहां से लिखता हूं। F is a function of x and y and is equal to 2xy plus y square I cap plus x square plus 2xy j cap। ये फोर्स दिया हुआ है और अगर आपको ये फोर्स दिया हुआ है तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको पता है कि इन कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो, work done between the 2 points is path independent, or the total mechanical energy remains constant in the given field. लेकिन यहां आप फोर्स को देखकर ही आपको कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है? आफ्टर ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दे आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, natural conservative fields, but you can always generate a force of your choice which may be conservative. तो ये है फोर्स। तो the question is it conservative field? और फिर ऑप्शंस है, द फोर्स फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ और पॉइंट 0011 डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, द वर्क डन in a closed path starting and ending at 0 and 0 is 0. There exists a scalar potential function. There exists a scalar potential function phi xy such that f is equal to minus grade phi. तो पहले हमें ये देखना है कि is this force a conservative force? Once it is conservative, then I will tell you which options are correct. Right? Okay. चलो, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि is the given force a conservative or a non-conservative force. But you have to keep that into mind, and that will give you the power to solve the question in a minute. एक ही मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व फिर कर सकते हैं। तो देखिए, ये F इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इज अ प्लेनर फोर्स। ये x कंपोनेंट है फोर्स का और ये y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट है फोर्स का 2xy प्लस y स्क्वायर और y कंपोनेंट फोर्स का दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy। ये है x कंपोनेंट फोर्स और दिस y कंपोनेंट फोर्स। कंडीशन ये है कि differentiation of this force with respect to y, differentiation of this x component with respect to y, if this is equal to differentiation of y component of force with respect to x, अगर ये दोनों इक्वल है, समझो इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स। बस, दैट इज ऑल। आई एम नॉट गोइंग इनटू थ्योरी ऑफ इट, व्हाई इट इज सो, where from it comes, ये ऐसा क्यों कंडीशन है, लेकिन फिलहाल आप याद रखो। आप कमेंट्स में ये मुझे बताओ, इफ यू वांट अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस, तो मैं डिटेल डिस्कशन भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन समटाइम्स व्हाट यू नीड जस्ट ए रूल, द फॉर्मूला, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस दैट कम अक्रॉस यू। तो इसलिए ये जो कंडीशन है इसको याद रखो और मैं ये कंडीशन यहां अप्लाई करता हूं। एंड देन लेट मी सी, याद रखो, differentiation of x component of force with respect to y should be equal to differentiation of y component of force with respect to x. Okay, now have a look. Now have a look.
चलिए, so what is f component of force? What is f component of force? That is 2xy plus y square. जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी, क्योंकि x कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जो दूसरा कंपोनेंट होता है, मतलब दूसरा जो पैरामीटर होता है x, that has to remain constant because you are partially differentiating. So the other parameter has to be kept constant. तो यहां पर इस डिफरेंशिएशन में x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y because x is constant, right? तो बाकी सॉरी x कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 2x plus 2y. This is the differentiation of fx with respect to y. Okay, now let me what is fy? That is x square plus 2xy. अब जाकर के जब आप x कंपोनेंट के अबाउट डिफरेंशिएट करोगे तो फिर उस चीज में, उस इक्वेशन में आपको y कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहां y कांस्टेंट रखने के लिए दिस इज कांस्टेंट, सो del f y by del x is equal to x 2x प्लस यहां y कांस्टेंट है ना, सॉरी यहां y कांस्टेंट है तो इट विल बी डिफरेंशिएशन 2y. इफ y इज कांस्टेंट, x के बगैर ये दोनों कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 2y होगा डिफरेंशिएशन 2xy का। तो ये तो हो गया दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस. सो by this argument, by this rule, the given force is a conservative force. That's all. Once again, if this is equal to this, the force is conservative. If the differentiation of x component of force with respect to y is equal to differentiation of y component of force with respect to x, अगर ये दोनों बराबर है, समझो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन फोर्स का, ये कंजर्वेटिव फोर्स है. Okay, now see here, the force field F is conservative. Yes, it is correct answer. The line integral of F from point 0 0 to point depends on the path. No, this force should be path independent, so B is not the correct answer. The work done in a closed path starting and ending at 0 0 is 0. Yes, the work done over a closed path is 0. You are starting from 0 0 and ending back on 0 0. The work done is 0 because it is a conservative field. That has been proved by the equation, by the technique. There exists a scalar potential function such that f is equal to, such that f जो है that is equal to minus gradient of phi, that is del phi. Yes, because if force is conservative, then force is a gradient of potential. If f is a conservative force, then force is the negative gradient of potential energy. Phi is potential energy, that is a scalar field. This is a scalar field. Okay, so A is correct, C is correct, D is correct. So this is the first is the correct answer. This one पहला है, पहला अगर आप देख रहे हैं अच्छी तरह से क्योंकि it is a white background and it's very difficult to see it, but you try to do it this way. A, C and D, these are the correct options. The given force, and use this technique to see whether it is a conservative or non-conservative force. Once it is conservative force field is conservative. Yes. The line integral from A to this depends on path. No, because it should be path independent. The work done over a closed path is 0. Yes. There exists a scalar potential where F is equal to minus grade phi. Yes, that's it. Because in conservative fields, you define a scalar potential, which you call as potential energy. You don't define potential energy in non-conservative fields. So this was a problem. It was a very good problem. You try to solve it. It's a brutal problem. It teaches you a concept. It teaches you a technique. That's why I have decided to show you this problem to you. Thank you.